Now, how it works, let's go for that. Now, over here, first thing is that moderately hard puzzle needs to be solved. Already we have learned about the mining technique, right? Matlab with proper simulator as well, we are able to know what exactly is mining, right? So जब भी हम बोलते हैं like puzzle solve करना है, it means that puzzle solve करना है मतलब like you are supposed to find out the hash value which is lower than the target and which is satisfying the nonce. That is nothing but the puzzle. So that is going to be happen in the proof of work. Okay. Now, how it works, like already we know a little bit about that because already we have gone through the mining. So first thing is that whatever the transactions are there, because only you are not the only person which is going to initiate the transaction. आपको ही नहीं करना है ना, right? So in blockchain network, out of thousands of people, maybe there are 10 people who wants to perform the transaction at the same time, right? So such transactions which are being initiated by such persons, such transactions will be bundled together, and after bundling that, it will be combined in the block. Still that block is not attached to the existing blockchain, so wo block mine kiye jayenge. Now what exactly is mining, already you are very much aware about that, so let's not repeat the same thing again, right? So they'll calculate mine karna hai matlab like they are supposed to calculate the hash value which is going to satisfy the nonce, which is going to satisfy the target value as well. And once any of the miner is able to calculate the hash value which is lower than the target and which is satisfying the nonce, then I can say that that block is successfully mined. वो mine होने के बाद, then that block will be attached to the existing blockchain, right? Now, over here, this process already we have know that, right? Now the thing is that over here, जब हम proof of work बोलते हैं, at least 51% of the यहाँ पे okay यहाँ पे नहीं दिया है, so at least 51% of the nodes should agree whether this transaction is valid or not. मतलब valid है या at least 51% of the nodes ने कहना चाहिए, right? So for example, let's go for one example. चलो मान लेते कि like we are a part of, means whatever the participants are there, including me, all are the part of blockchain network, and someone has initiated the transaction. अभी हमको verify करना है, right? Now assume that over here we 10 are the like nodes within that like the blockchain network. Out of 10, at least 6, 51% मतलब कितना आएगा, like 6, right? Not exactly 51%, मतलब it should be more than 50%. ये logic है, okay? So more than 50% मतलब minimum 6 nodes should be there, right? तो minimum 6 nodes ने कहना चाहिए that this transaction is valid. अगर मिनिमम 6 नोट्स कहते हैं ये ट्रांजेक्शन वैलिड है, तो ही ट्रांजेक्शन प्रोसीड होगा, देन दैट ट्रांजेक्शन विल बी बंडल्ड इनटू द ब्लॉक व्हिच विल बी प्रोसीडेड फॉर द माइनिंग. ये होता है प्रूफ ऑफ वर्क का कंसेप्चुअलाइजेशन. सो एटलीस्ट 51% ऑफ द नोट्स शुड से ट्रांजेक्शन इज वैलिड. अगर 51% नोट्स ने बोला है दैट दिस स्पेसिफिक लाइक ब्लॉक specific transaction is not valid, then that transaction would not be proceed for the further steps like combining in the blocks and mining the block. वो होगा ही नहीं. Okay, so that is the idea of proof of work. Now, how hard it is, like whether we can mine with phone, laptop, server, data center. Of course, phone, laptop will be burnt out. It's not possible. मतलब उतना कैपेसिटी रहता ही नहीं है इन चीजों का. Even the server, like whatever the numbers of hash values calculations are there, that should be more lakhs of hash values should be calculated per second. So आपका phone, laptop वो calculate कर ही नहीं पाएगा. Even like in 2020, I tried with my laptop and it got burnt. So there's no use of using laptop for Bitcoin mining at least. Okay, so already I told you yesterday, जब मैं कर रहा था तब at that time 12.5 bitcoins reward था, लेकिन just yesterday हमने देखा है like it's just 3 point something rewards are there, right? So Bitcoin uses proof of work where actual mining whatever we discussed it is going to be happened, and 51% of the nodes should say the transaction is valid, then only further proceedings will be done, else it won't be done. Okay, so like proof of work like Bitcoin में यूज होता है, वहां पे SHA-256 algorithm यूज होता है. Already we have discussed about these things yesterday, right?
So now, main feature is that anyone wants to speak? Okay, I think it was by mistake. Okay, so main features of this proof of work system is that it's really hard to find the mathematical problem, solve the mathematical problem. Mathematical problem, matlab, like it is hard to find out the hash value, which is satisfying the nonce and which is under the which is lower than the target value. वो थोड़ा सा hard होता है because even some of the times what happens like 1 lakh hash values are calculated but those won't get matched to the nonce or it won't be lower the target value ऐसा हो सकता है. So it's not like कि हमेशा आपका hash value correct ही होगा. Okay, then 51% of the risk as at like as we told. Now ये assume करते scenario कि हम सभी लोग, now it's not the online session, it's the offline session. So of course we'll be sitting in Meghe college, right? So at that time what can be done, like अगर मैं कुछ blockchain का transaction initiate कर रहा हूँ, like वहां पे जो कोऑर्डिनेटर है, यस डोंट टेक इट सीरियसली, इट्स जस्ट फॉर द कंसेप्चुअलाइजेशन. वहां पे जो कोऑर्डिनेटर है हमारे एफडीपी के, लाइक दे आर सेइंग दैट व्हाट एवर द ट्रांजेक्शन इज गोइंग टू बी इनिशिएटेड, जस्ट मेक देम वैलिड. मतलब वो कंट्रोल कर सकते हैं ना, बिकॉज इट्स अ सेंट्रलाइज्ड अप्रोच. वहां पे हम लोग एज ए गेस्ट गए, सो दे कैन फोर्स अस, लाइक मतलब सभी लोगों ने ट्रांजेक्शन वैलिड करना है, right? So that is 51% risk. मतलब at least out of all hundreds of participants, at least 60 to 70 people are going to check like the transaction is valid, वो कर देंगे valid, right? इसका ये मतलब है, what I wanted to convey over here, the hacker can control at least 51% of the devices who are part of validation of the transaction. This is the major risk. But now, guys, it's to 2024. Now, overall world, there are a lot of machines who are part of Bitcoin network. चलिए मान लेते हैं कि मैं हैकर हूं. I can control all the machines which are part of like Bitcoin network in my Pimpri-Chinchwad University, or I can control all the machines in Pune region. But can I control all the machines in Mumbai? चलिए ये भी मान लेते हैं कि मुंबई में भी कर लिया मैंने. But out of Maharashtra, is it possible? Of course not. Out of India, is it possible to control the machines? Of course not, right? So whatever the risk is there, 51% risk, it's literally it's literally theoretical. Practically, it's not possible at all because hacker is going to belong to the specific region. Overall world के वो machines control कर ही नहीं पाएगा. Okay, so it will be the theoretical one, but definitely, it's going to be the time consuming because on an average, Bitcoin का block हर 10 minute के बाद mine होता है. So इसका ये मतलब like whenever you are going to initiate any transaction, that transaction validation will take 10 minutes. Where in centralized approach, it will be done within the seconds. Got it? So that is the constraint over here. Plus, apart from that, resource consumption is there. Just yesterday, I have shown you the one of the picture कि कैसे machinery लगती है to mine the Bitcoin, right? So it's high resource consumption is there along with the electricity bill, along with the servers, along with the application specific integrated circuits. It's too like too expensive. Plus transition consumption rate, already I told you that at least it will take on an average 10 minutes are required. इसका ये मतलब नहीं कि 10 minutes के नीचे नहीं हो सकता. Actually just we have seen that every block was mined like with the distance of 4 minutes 6 minutes वो mine हुआ था, हमने देखा है. लेकिन ऐसे भी blocks होते हैं which may take 20 minutes to mine, which may take 30 minutes to mine, likewise 60 minutes तक चले जाता है rate. But on an average every Bitcoin block will be mined with the interval of 10 minutes. Okay, so that is the concept of like proof of work. Now, cryptocurrencies which are using proof of work are Litecoin, Ethereum, Monero coin, Dogecoin. Yes, in Ethereum you can say that like always it's not like that. Proof of work use hota hai. Right now Ethereum 2.0 is using proof of stake. Okay, so proof of work. लेकिन जो भी हम अभी देखेंगे, it's going to be used proof of work only. वही होगा. But Ethereum is also using proof of stake. Okay, for the just sake of your additional knowledge. So that's it about the proof of work and proof of stake. अगर बात करूं तो लाइक मैं एक एक्सेल शीट ओपन कर लेता हूं. ओके, बी पर्सन है, बी पर्सन है,
C person है D. Okay. Now A person has invested 1500. B person has invested 40,000. C person has invested like 1,000 and he has invested 5,000. Assume that D. ठीक है. एक ही स्टेक लिया है इन ट्रेडिंग. ओके, मतलब एक नॉर्मल ट्रेडिंग लाइक सेंसेक्स का. ठीक है. सो एनएससी पे कुछ ना कुछ ट्रेड लिया है उसने एंड सेम ट्रेड लिया है चारों ने एंड द प्रॉफिट वाज लाइक आई अज्यूम दैट 15% वाज द प्रॉफिट. सो नाउ ओवर हियर यहाँ पे इन चारों में से किसको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, किसका अमाउंट ज्यादा होगा, प्रॉफिट किसका ज्यादा होगा? ओके, नो आंसर्स. जिसका ज्यादा इन्वेस्टमेंट है उसे ज्यादा पैसे मिलेगा, राइट? सो 15% ऑफ द 40,000 विल बी द प्रॉफिट. उसको ज्यादा पैसे मिलेगा, राइट? उसके बाद इसको मिलेगा एंड देन ए एंड देन सी, राइट? मतलब फर्स्ट मोस्ट अर्निंग ज्यादा प्रॉफिट बी को होगा, उसके बाद डी को होगा, देन ए एंड सी. द थिंग व्हाट आई वांट टू कन्वे ओवर हियर, जितना ज्यादा स्टेक आप डालोगे ट्रेडिंग में उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा, राइट? सो सेम कंसेप्ट इज फॉलोड इन दी प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस एल्गोरिथम. ओके, प्रूफ ऑफ स्टेक क्या करता है? यू आर सपोज टू पे सम अमाउंट इनटू द नेटवर्क. चलिए मान लेते हैं इथेरियम. सो इथेरियम आल्सो गोस फॉर प्रूफ ऑफ स्टेक, राइट? सो चलिए मान लेते हैं कि बी बी ने बी पर्सन ने बी अकाउंट होल्डर ने ऑन द इथेरियम नेटवर्क he has given 40,000 tokens or Ethereum tokens into the network. Likewise, 1,500, 40,000, 1,000 and 5,000. So of course profit किसको ज्यादा मिलना चाहिए? B को, right? So in consensus algorithm of Ethereum, if they are using the proof of stake explains that you are supposed to put some stake into the network if you want to mine the block. अगर आपको माइन करना है तो उतना आपको स्टेक करना पड़ेगा कुछ ना कुछ. So the thing is that main advantage is that if I am going to put 40,000 my crypto coins into the network just for the sake of mining, then definitely मैं कुछ fraudulent activity नहीं करूंगा because my that much amount will be wasted, no? अगर मैं कुछ fraudulent activity करूंगा तो. That's why I'll make sure that whatever the transitions are there, all the transitions will be genuine, and whatever the activities I'm going to carry on that Ethereum blockchain, all the things should be the genuine one. Clear? So that can be done. So over here, agar 40,000 मैंने invest किए, so number of chances to get the mine the block are greater for B. So it might happen that 10 times Ethereum network may give opportunity to B person to mine the block. उसके बाद में किसका ज्यादा स्टेक है? डी का है. तो डी को शायद 5 टाइम्स मिलेगा अपॉर्चुनिटी टू माइन द ब्लॉक. इसको 3 बार मिलेगा और इसको 2 बार मिलेगा. इट कैन बी लाइक दैट. मतलब जिसका ज्यादा स्टेक that many number of times that person may be able to mine the block and उसका माइनिंग का जो रिवॉर्ड है वो उसके बदले में उसे मिलेगा. मतलब 40,000 will be back as it is, but as he has put into the stake, that 40,000 in the amount of 40,000 extra amount will be added as the reward अगर वो block mine successfully करता है तो. So B को ज्यादा chances मिलेंगे because he has put lot of stake into the network. So 10 times B will be able to mine the block. Now that's another part कि whether he'll be able to successfully mine the block or not, that's another thing. But उसको 10 opportunities मिलेंगे. So जैसे stakes रहेंगे, as per that the opportunities will be given to the person to mine the block. Now if you are having any questions in proof of work or proof of stake, please let me know. I hope yes. Okay, I hope that there is no doubt. Let's proceed further. Now let's go for Ethereum. So already we have talked about Ethereum in our last session. So already we discussed that Ethereum belongs to the type 2
and Ethereum also belongs to the public network. Already हमने कल देखा है, right? So type 2 indicates like I'll be able to write my program for the Ethereum blockchain as well as there is the existence of one cryptocurrency Ether. So अगर आपको Ether के बारे में जानना है, then you can do like current price is one Ether. Look, it's around 2 lakhs. Okay, so one Ethereum price is around 2 lakhs rupees right now. So if you want to trade, you can trade. Definitely I would have got a lot of profit, because when I started in 2019, at that time the price of Ether was 15,000, just 15,000, 15,000 thi. So right now it's been increased too much. So it's great. Whoever has invested into the Ethereum, they might have got the good profit over here. So इथेरियम का वो एक क्रिप्टो करेंसी है और उसका एक प्लेटफॉर्म भी है. हम प्लेटफॉर्म के बारे में जानेंगे. विल बी कोडिंग दैट, बट बिफोर दैट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड लिटिल बिट अबाउट द इथेरियम. ओके, सो बिटकॉइन का मेन पर्पस क्या था? जस्ट फॉर द एक्सचेंज ऑफ लाइक करेंसीज, क्रिप्टो करेंसीज. उसका सिर्फ पर्पस एक्सचेंज का था. But later on, by looking at the advantages of blockchain, underlying blockchain of the Bitcoin, researchers as well as the developers are able to understand that there is too much potential into the blockchain. So why we need to just go for the just maintaining the payment network? We can also use the same network for our programming purpose as well. So that was the thought of lot of researchers. So in that aspect, Ethereum came into the picture. So Ethereum was launched in 2015. Matlab, like after 6 years of launching of Bitcoin, and this was launched by the Vitalik Buterin. Once he has the like launched Ethereum, there was tremendous changes into the blockchain market, because we were able to code. And right now, take any company name, IT name. In most of the companies, 70 to 80% of the companies are handling at least one blockchain project. Plus, Modi government has also gone through the like conceptualization of the blockchain. They have released 5 years of plan. तो उसके हिसाब से definitely there will be the jobs in government jobs in the blockchain domain as well. So जिसको interest है, please go for the blockchain knowledge, and later on you can promote your students or your neighbors or whoever your belonging persons are there. You can inform them about the blockchain, the importance of blockchain as well. So as I told, like with the help of Ethereum, we'll be able to develop our own applications. We can write our own smart contracts. Plus, it is also going to be like used for the crypto transfers, cryptocurrency transfer भी कर सकते हैं. So there are two main purposes of Ethereum. Either we can go with the just crypto exchanges, or we can upload our own program. खुद का program हम कर सकते हैं इसमें. Okay. Now over here, already we discussed that Ethereum uses proof of work as well as proof of stake. Ethereum 1.0 is going to use proof of work, and Ethereum 2.0 is going to use proof of stake. But still, proof of stake is under research. So whatever the programming is being done on the Ethereum, it's not that much in the proof of stake, but rather it's been done in proof of work itself. But it's your choice. अगर आपको Ethereum download करना है, so you'll be having choice like whether you want to go with 1.0 version or 2.0 version. But try honestly speaking, I didn't try proof of stake of Ethereum currently. So I always tried proof of work, because whatever the purpose was there for mine, it was only for the proof of work. But if you want to go with proof of stake, definitely you can go for that. No worries about it. Now, that's another part. Yes, these are the features of Ethereum. First thing is that it's much secured. Secure in the sense like what we talked about the normal features of the blockchain, like it's having encryption algorithms, it's having like hashing techniques, etc. All the things are also part of Ethereum. So that's why it's secured one. Plus, no one is going to like modify anything, alter anything, or no one will be able to delete anything on the Ethereum. So as the features of the blockchains were there, all the features are applicable for Ethereum as well. That's why it's much secured.
Then Ethereum. Now Ethereum is having its own community as well. Let me show you the way over here. Mm, Let me go over here. Now this is the Ethereum market. You can observe that. Yeah, let's not talk about the trading over here. My main concept was over here to go with the social networks. Look over here. So it's having the its own platform on like X means Twitter over here. Twitter guy. Plus it's having its own website. You can observe that. Plus it's having own explorers. उसका खुद का पेपर है एंड ओवर हियर यू विल बी एबल टू गेट द सोशल प्रेजेंस ऑफ दिस इथेरियम नेटवर्क ट्विटर पे है देन इट्स आल्सो ऑन रेडिट इट्स आल्सो ऑन गिटहब एंड इट्स आल्सो ऑन गिटर राइट सो दिस आर द फ्यू वेज ओवर हियर ये देखो इसकी खुद की वेबसाइट है दिस इज द बेस्ट एक्चुअली मतलब अभी ये क्रिप्टो करेंसी का सेशन नहीं बट यू शुड हैव एडिशनल नॉलेज लाइक अगर किसी क्रिप्टो करेंसी की खुद की वेबसाइट नहीं है सो डोंट इन्वेस्ट विद इन दैट क्रिप्टो करेंसी दैट्स माय सजेशन अगर किसी क्रिप्टो करेंसी का खुद का व्हाइट पेपर नहीं है लुक ओवर हियर दिस इज द व्हाइट पेपर अगर व्हाइट पेपर नहीं मिलता है आपको किसी लाइक क्रिप्टो करेंसी का देन दैट्स नॉट द जेन्युइन वन वो जेन्युइन हो ही नहीं सकता बिकॉज एवरी क्रिप्टो करेंसी मस्ट हैव द व्हाइट पेपर होना ही चाहिए ओके सो व्हाइट पेपर देखो लाइक अगेन इट्स हैविंग द सोशल प्रेजेंस जस्ट एज आई हैव टोल्ड इसका खुद का ये भी है लाइक explorer इसे explorer बोलते हैं now you can observe that guys over here I also said that it's a corporate friendly it's been done assets के जा रहे तो fast over here it's fast why it's fast let's check that out if you recall okay अगर कुछ लोग नए ज्वाइन हो चुके होंगे let me show you the same things also ये देखो ये बिटकॉइन का ब्लॉक है राइट ये अभी माइन हुआ है 3:04 पे राइट सो 3:04 पे माइन हुआ था उससे पहले 256 राइट मतलब दोनों में डिफरेंस कितना है अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट्स राइट अप्रोक्सीमेटली देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 8 मिनट्स मतलब आफ्टर 8 मिनट्स द ब्लॉक वाज माइंड एंड लेट्स गो फॉर द इथेरियम ब्लॉक दिस आर आल्सो रियल वन ये देखो 11 सेकंड्स अगो ये ब्लॉक माइन हुआ था मतलब अभी भी रिफ्रेश करूं तो ये देखो 12 सेकंड्स अगो 24 सेकंड्स अगो मतलब देयर इज अ बेसिक डिफरेंस लाइक ओनली 30 सेकंड्स और 1 मिनट उतना ही डिफरेंस है गेट दैट मतलब जितना टाइम बिटकॉइन ब्लॉकचेन को लग रहा था उतना टाइम इथेरियम में नहीं लगेगा दैट्स व्हाई इट्स फास्ट getting that now assets means you are able to write your own smart contracts आप खुद के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वहां पे लिख सकते हो दैट्स व्हाई like this is one of the feature and uncensored मतलब like you can post anything within the ethereum group जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है टेक्निकली यू कैन आस्क द थिंग्स सो these are the main features of ethereum so most of the programmers like use ethereum जो भी novel है in blockchain they go for ethereum first and then they go for hyperledger fabric okay but ethereum applications are really very good and to learn about ethereum it's really very fantastic now apart from that ether is the cryptocurrency okay which is supported now why I'm elaborating ether over here जब हम program करेंगे ना at that time you will be able to know about that okay later on smart contracts जो हमने अभी बोला था like uh, you can code your things right then evm now let me show you the evm now this is the remix platform guys you can observe here हाँ मैंने डायरेक्टली ले लिया ना तो यहाँ पे ना गूगल करो आप Vidya ma'am, whether they'll be performing with me or I should go on? Sir, it's better if you go on. Okay, perfect. Otherwise, just share the platform where they can start the practicals. Yes. So
as a session is being recorded, you might be getting the recording as well. And if you are able to follow me right now, you can follow me. But as per the instructions by the coordinators, I cannot wait for you. So please take a look over here, and later on you can perform your own experiments. Okay. So I was talking about this one. So remix, Google में type करना है. So Remix is the one of the ID online ID where you'll be able to run your own programs on the Ethereum blockchain. Okay, तो यहाँ पे ये नहीं check करना है. You should go over here. Remix Ethereum ID. Okay, so once you go over there, then you'll be able to come to this platform. Already I have performed few experiments. That's why few contacts would be appeared over here. Just hold on. Okay, so the thing is over here, ये remix platform open हो जाएगा, and within that you can observe, देखो, these are the compilers, guys. So it's a virtual machine. This is Ethereum virtual machine. Okay, so I mean Ethereum virtual machine, this one over here. मतलब जो भी प्रोग्राम यहाँ पे लिखोगे ना आप, so we'll write the program, don't worry. Let's go step wise execution of this knowledge, then let's code that. Okay, so Ethereum virtual machine means like JVM hai, right? You might have coded in Java. So likewise Ethereum virtual machine is there where you'll be able to code anything within that virtual machine for the Ethereum blockchain. And using that EVM, you'll be able to develop your own decentralized application using smart contracts. And then decentralized autonomous organization, matlab like using the smart contracts, what are the functionalities of any organization will be there, that will be automated because of the code which you have written in the smart contract. So these are the features of Ethereum. So agar aapko likhna hai like smart contract, then definitely you can follow the steps. The first thing is that you are supposed to agree on specific language. So हम अभी solidity language use करने वाले हैं. So using the solidity language, you can write the code in Ethereum virtual machine, and later on that code will be uh, compiled, which will be available for every node into the Ethereum blockchain. And later on, whatever the work is there, that will be compiled and submitted to the Ethereum blockchain. That will be evaluated or mined by all the nodes into the Ethereum blockchain. And then you'll be able to know whatever your main purpose of that application or code was there, whether it's getting executed or not, that will be done. So these are the steps. Now, EVM may use proof of work or proof of stake. Already we have discussed about that. Now there is an again concept, guys, that is the gas. Gas is also involved over there. Now, gas क्या होता है? Like, do assume that, guys, you are having car or bike, right? चलिए मान लेते कि आपके पास है व्हीकल है कोई ना कोई, but automatically वो चलेगा क्या? Of course not. You are supposed to refuel the tank, right? It might be petrol, it might be diesel, or it might be any other means like CNG or any means, right? But you must refuel your vehicle if you want to travel again, right? मतलब आपके पास गाड़ी है, इसका ये मतलब नहीं कि लाइफ टाइम वो चलती रहेगी. You are supposed to refuel that. In same way over here, whatever the transactions executions are there on your Ethereum platform, आप member हो जाओगे, आप you will be connected to the Ethereum node, Ethereum blockchain platform. लेकिन अगर आपको कुछ transactions करने हैं, then you are supposed to pay some fees. You are supposed to pay the gas. हाँ, definitely you can argue. Like, then what's the difference between like जो भी आप बता रहे थे like बैंकिंग एप्लीकेशन का इतने चार्जेस लगते हैं, लाइक जो भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस एक्सेट्रा वो यहाँ पे भी लग रहे हैं, राइट? यू कैन आर्ग्यू ऑन दैट, राइट? बट द थिंग इज दैट गाइस, व्हाट आर द चार्जेस आर रिक्वायर्ड ओवर देयर. यहाँ पे इथेरियम में चार्जेस बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है. ओके, सो नो वरीज अबाउट दैट. you'll be able to see that, don't worry. बहुत कम चार्जेस होंगे. इवन नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लॉकचेन इज आल्सो compared with the क्लाउड्स. तो क्लाउड्स का चार्जेस देखो गाइस, मंथली बिलिंग कुछ तो 30-40 हजार आएगा कम से कम छोटे प्रोजेक्ट के लिए. सो इफ you are going to compare the cloud charges with this EVM one, it's really very less. Even
If you compare our annual charges for the banking application, then also it's very less. और यहाँ पे क्या है, like जब आपको कुछ ट्रांजेक्शन करना है तभी गैस पे करना है. It's not monthly, it's not annually, it's nothing like that one. Okay, even जब भी हम प्रोग्राम करेंगे at that time we will be able to know about the gas as well. वहां पे भी गैस देखेंगे हम. Okay, now so gas is generally is like represented in way. वे मतलब WEI, मतलब ईथर का एक छोटा सा यूनिट है. लाइक पैसा, लाइक रुपी. हाँ, इंडियन करेंसी क्या है, रुपीज है, राइट. तो इंडियन 1 रुपीज, 1 रुपीज फॉर्म होती है 100 पैसे कंबाइन करने के बाद, राइट. सो इन सेम वे, जैसे पैसा छोटा यूनिट है ना रुपए का, लाइक वाइज वे इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द इथेरियम. ओके. Now, yes, I was going to explain this one. तो गैस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ट्रांजेक्शन फी उसकी, लाइक गैस लिमिट क्या है और गैस प्राइस क्या है. मतलब लाइक यू कैन कंसिडर लाइक आपके टैंक की लिमिट कितनी है, राइट. चलिए मान लेते हैं कि योर कार कैन अकोमोडेट 20 liters ऑफ द पेट्रोल, एज्यूम कर लेते हैं, राइट. सो 20 मल्टीप्लाइड बाय योर पेट्रोल प्राइस. सो सेम काइंड ऑफ थिंग वुड बी ओवर हियर एज वेल. सो इथेरियम में जो भी आपका गैस लिमिट रहेगा, आपका प्रोग्राम का गैस लिमिट कैन बी डिफाइंड बाय यू, और इट विल बी ऑटोमेटिकली डिफाइंड. एंड द इथेरियम प्राइस विल बी इंक्रीज और डिक्रीज, इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट. तो जितनी भी करंट प्राइस रहेगी उससे मल्टीप्लाइड बाय योर लिमिट विल बी देयर, एंड दैट विल बी द ट्रांजैक्शन फी फॉर योर एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजैक्शंस. दैट इज गैस ओवर हियर. यस, ये ठीक है. डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन दियो एक्सटर्नली. Okay, I think this much is enough for you right now. Now, let's proceed with the programming concepts. Now, before that, I would like to ask for the last time for the Ethereum blockchain, if anyone is having any doubt, please feel free to ask. Any doubt? Let's wait for 1 minute. If you are having any doubt, please put your queries into the chat box. So please share your contact number. Okay, at the end of session, I'll be sharing my details, contact details. But it's humble request to contact on mail rather than mobile number. But I'll provide both of the things. Okay. I hope you got the message. Whatever I want to convey, I wanted to convey about the Ethereum. Okay, fine. Let's proceed. चलिए अब हम remix में जाते हैं. Let's go with our first smart contract. Just a minute. Yes. If you are doing with me, I'll be taking small pauses for your space. So again, I request that Google Remix, and within that, go for Remix Ethereum ID, and once you click on that, okay, click ही कर देता हूँ, ये close ही कर देता हूँ मैं, so that you'll be comfortable. Let me close this one as well. Okay, Remix ID open होगा. So by default, you'll be getting these few samples of the contracts, and over here you'll be getting a lot of things. अभी यहाँ पे क्या करना है? Create new file. Oh, of course, you can create your own folder, and उसमें आप contract कर सकते हो. No problem. But I'll go in this way. Now, do remember यहाँ पे हम Ethereum पे जो भी प्रोग्राम करते हैं, we are going to use the Solidity language. In Solidity language, you are supposed to code your logic. Okay, so let's go with a few samples. कुछ sample ले लेता हूँ so that you'll be able to know that. So I'll write the name of first smart contract first. Just a minute.
हॅलो. हा आज कुठं नाही, नाही. थोडं ऐक ऐक मी थोडं सेशन मध्ये ऑनलाईन सेशन मध्ये आय कॉल यू बॅक. Yes. First dot sol. Now dot sol. Why it is that like that? Because I'm going to write the smart contract in Solidity. अगर आपको Python में लिखना है तो dot py लिखते हो, Java में लिखता है तो dot java लिखते हो, C में dot c cpp for C++, right? In same way over here first dot sol to write Solidity smart contract. Okay. Now over here you are supposed to write pragma. I'll explain every statement. Don't worry. सो यहाँ पे स्टेटमेंट कौन सा हो रहा है. Let me write the things so that I can explain it. Okay. Hmm. Just hold on. सर बिल्डिंग छोड़नी है ना. ठीक है सर. Okay. No problem. Hmm. Okay. Let's focus over here because anyhow, this is just a constructor. Will not get any output. Okay. Now here, इसमें से बहुत से keywords ऐसे already you are very much aware, right? The thing is that like constructor क्या आपको पता है, public क्या है आपको पता है, right? So the thing is that हम let me compare this one with the another program. Let me write that one as well. So हम generally class कैसे लिखते हैं, like in Java or any language, class hello, and within that we can write, अगर मुझे मेथड लिखनी है I'll write public void कुछ तो मेथड का नाम, and then this one, right? यहाँ पे जो भी आपका लॉजिक रहेगा, right? So this is the thing over here which is going to happen, right? तो यहाँ पे yes of course you can write like int जो भी रहेगा आपका, right? Int, float, string, etc. So the thing is that let's compare this one. मतलब कुछ भी डिफरेंट नहीं है सॉलिड लैंग्वेज अगर होगी तो भी. So the thing is that यहाँ पे क्लास लिखा है, यहाँ पे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लिखा है. ओके यहाँ पे क्लास का नाम है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का नाम है. नाउ स्ट्रिंग दैट इज डेटा टाइप, यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दो डेटा टाइप. So whatever the data types are there which we have learned in like C, C++, Java, Python, जितने भी languages है, right? In most of the languages the data types are same, right? In Solidity as well it's same, nothing is different. Okay, now
कंस्ट्रक्टर इसलिए होता है कि लाइक टू इनिशियलाइज द क्लास मेंबर्स, so you can write the constructor even in the constructor, यहाँ पे लिख सकते हो। so, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या है, हम एक्सेस मॉडिफायर बाद में लिखते हैं। ओके, एक्सेस पर यहाँ पे क्या होता है, हम एक्सेस मॉडिफायर पहले लिखते हैं, राइट। पब्लिक वॉइड मेथड, अभी यही चीजें अगर मुझे लिखना है लाइक इन सॉलिडिटी, आई शुड राइट फंक्शन, मतलब फंक्शन कीवर्ड होता है, फंक्शन मेथड एंड देन पब्लिक। मतलब सिर्फ हमको एक समझना है कि लाइक इफ यू आर वेरी मच अवेयर अबाउट इवन सी लैंग्वेज, then also it's sufficient to go for like blockchain programming. Nothing is difficult. सिर्फ आपको कीवर्ड कौन से होने और सिंटैक्स क्या है इतना ही पता होना चाहिए, लॉजिक तो वही रहेगा, लॉजिक इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। सिर्फ यहाँ पे पब्लिक लास्ट में जाएगा, हम इन नॉर्मल लैंग्वेजेस इट इज अटैच्ड एट द फ्रंट साइड इटसेल्फ, उतना ही डिफरेंस है। ओके, सो वो चीज याद रखनी है। देन यहाँ पे प्रिंट ऐसे डायरेक्टली नहीं होता है, प्रिंट कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। So I hope that you are comfortable with this code. यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो। And now of course अगर कुछ एरर है या वार्निंग्स है, you'll be able to know that, यहाँ पे ऐसा मिल जाएगा आपको। If I intentionally make any error, यहाँ पे देखो एरर आएगा, एरर यू विल बी गेटिंग दैट। सो जो भी अभी ऑनलाइन कंपाइलर्स है, लाइक व्हाट एवर द इंटेलिजेंस आर देयर इन इवन इन द ऑफ चेन, मतलब ऑफलाइन जो कोडिंग प्लेटफॉर्म्स है, वीएस कोड एटसेट्रा, उसमें भी ऐसे इंटेलिजेंस के हिसाब से वो दिखाते हैं, राइट। सो व्हाट एवर द एरर्स आर देयर, सो सेम काइंड ऑफ थिंग इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर एज वेल, सो दैट्स नॉट एन इश्यू। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। अगर आपको कंपाइल करना है तो ये देखो यहाँ पे सब टैब्स है, सो यू शुड गो ओवर हियर, देन कंपाइल करो, राइट। अभी ओवर हियर, हाँ आई मिस दिस स्टेटमेंट, राइट, ये स्टेटमेंट मैंने मिस किया है। तो प्रैग्मा सॉलिडिटी 0.8.26, मतलब आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा कंपाइलर आपको यूज करना है, बिकॉज इन ब्लॉकचेन फॉर द सॉलिड कंपाइलर्स देयर आर लॉट ऑफ कंपाइलर्स, लुक दिस आर द कंपाइलर वर्जन्स। आपको जो भी सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर सकते हो, एनीवन, राइट। अगर मुझे ये सिलेक्ट करना है, इट्स फाइन, आई विल गो विद दिस 27। ओके, मुझे लाइक अगर मुझे ये चूज करना है 4.9 19, this one, okay। So likewise you can change the compiler versions अगर आपको ऐसा यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक दिस वन। नाउ ये इसका कैप का मीनिंग क्या होता है, इफ आई वांट टू यूज एनी वर्जन हायर देन 0.4, मतलब 0.4 में से ही कौन कौन से, 19 के अबाउट 28, 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, 26 है, राइट। तो ये कंपाइलर्स हम बाय डिफॉल्ट यूज कर सकते हैं, कौन सा भी कंपाइलर ऑटोमेटिकली यूज किया जाएगा। Is it clear? Now I hope that there is no doubt in any single statement of this program, simple program. हाँ यहाँ पे error है because of the compiler incompatibility. So forget about that. Don't worry. देखो अभी like there is no error at all. अभी error नहीं है, right? मतलब compiler के हिसाब से वो होता है. So you are supposed to identify the error. Now there is no error. If you compile it, you'll be able to compile the program, right? Now after compilation, you'll be getting this ABI and bytecode. अगर ABI को देखो मैं कॉपी कर लेता हूँ, so that and let me copy over here. Take that. This is your ABI. It's a binary format, format over here, which is going to represent your code. ये ABI क्यों लगने वाला है?
because this API is going to be required in the, like अगर आपको JavaScript use करनी है बाद में, front end applications develop करने हैं, at that time this API is going to be required. But for our today's workshop, we'll not use that. Let's make it simple, very much simple. Okay, because you might be new to the blockchain domain, so step by step जाने से बेहतर है. So next time maybe Datta Meghe College may organize a little bit advanced FDP on the blockchain. At that time you can rejoin again. Okay, so API will be formed, and bytecode will be formed. Okay, after compilation. Now, of course, जो भी compiler आपने यहाँ पे choose किया है, same should be reflected over here. Clear? Now, अगर आपको deploy करना है अभी, ठीक है? So यहाँ पे जाओ deploy में. Now you can choose any Ethereum virtual machine over here. Environment आप कौन सा भी choose कर सकते हो, right? Right now don't go for injector provider. I'll let you know later क्यों नहीं. Okay, तो remix VM जहां पे भी है ना, आप कौन सा भी choose कर सकते हो, right? So currently, like it will be continuously changing, guys, because in my span of like 6 years of research in the blockchain domain, I have gone through the multiple virtual machines in the remix environment. I've gone through the multiple Ethereum test networks. अभी वो है भी नहीं है. Okay, so likewise the virtual machines might be changing. आपको सिर्फ इतना ऑब्जर्व करना है कि remix VM आपको ऑब्जर्व करना है. So it can be Cancun, it can be like London, it can be like बहुत से. Okay, so select that one. Now you can observe that, guys, estimated gas. Look over here. जो भी हमने देखा था, मतलब कितना अमाउंट लगेगा. Okay, so यहाँ पे उससे पहले these are the accounts. In every account, these are the dummy accounts because it's a local host, no? Local host machine है, right? It's just Ethereum virtual machine. So Ethereum virtual machine में 15 account दिए जाते हैं. Okay, these are the 15 accounts. So in these 15 accounts, you are supposed to go with like every account is having 100 ethers. Of course, these are the dummy ethers. Clear? अभी ये देखो यहाँ पे वे यूनिट है. वे मैंने बोला था इथेरियम का लोवेस्ट पार्ट, जैसे इंडियन रुपीज का क्या है, रुपीज है, राइट? सॉरी, पैसा है. लाइकवाइज ईथर का वे है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर आल्सो अनदर यूनिट्स एज वेल. मतलब ईथर इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ दिस यूनिट इन द क्रिप्टो करेंसी फॉर द इथेरियम प्लेटफॉर्म. उसके नीचे फिनी आएगा, उसके नीचे जीवे आएगा, लास्ट स्मॉलेस्ट यूनिट इज वे. क्लियर? सो this is the gas over here. You can customize as well, और estimated gas मतलब ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट किया जाएगा. ठीक है? नाउ ये कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए इतना गैस लगेगा. ओके, यू कैन ऑब्जर्व दैट राइट नाउ 100 ethers आर देयर. अगर मैं डिप्लॉय करूं तो आपका ये जो लॉजिक है, ये सिंपल लॉजिक है, दैट विल बी गोइंग ऑन द ब्लॉकचेन. इट विल बी माइंड, एंड जो भी मैंने बोला था, थोड़ा सा तो कमीशन लगेगा, थोड़ा सा तो गैस लगेगा, राइट? सो दैट गैस विल बी यूज्ड फॉर दैट डिप्लॉयमेंट ऑफ दिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन द इथेरियम ब्लॉकचेन. ओके, क्लियर? नाउ लेट्स गो फॉर दैट. आई क्लिक ऑन डिप्लॉय. नाउ ऑब्जर्व दैट 100 ethers थे ना, अभी कुछ कम हुए, राइट? मतलब यू कैन ऑब्जर्व दैट ओवर हियर कितना कम चार्ज लगा. इट्स रियली वेरी लेस, राइट? 99.999999, मतलब कितना गैस गया हमारा, 0.000000 समथिंग, राइट? उतना ethers गया. नाउ you can have the transition details also, guys. Look over here. यहाँ पे सब आपको चीजें दिखेगी. This was the smart contract which was deployed, and after deployment over here you will be getting all the things, details. Okay, तो यहाँ पे देखो, this was the transaction. मतलब smart contract deployment is also considered as one of the transaction. Clear? So अगर मैं इस पे क्लिक करूं, I'll be getting the detailed status. ये देखो, ये ट्रांजेक्शन माइन हुआ है और एग्जीक्यूशन हुआ है. यहाँ पे लिख के आएगा दिस इज द ट्रांजेक्शन हैश. हर एक ट्रांजेक्शन का हैश कैलकुलेट किया जाता है. हमने कल ही देखा था, राइट? जिस भी ट्रांजेक्शन में, जिस भी ब्लॉक में ट्रांजेक्शन इंक्लूड किया है, उस ब्लॉक का हैश ये है. ब्लॉक नंबर इज 1. कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मतलब इसका एड्रेस जब हम डिप्लॉय किए, राइट? अभी ये क्या है गाइस? फ्रॉम मतलब जो भी अकाउंट होल्डर है, ये अकाउंट आपका था ना, राइट? सो 5B3 ऑब्जर्व करो, 5B3 एंड एड कर रहा है DC4. यहाँ पे वही आएगा, 5B3 एड कर रहा है DC4. मतलब जिस भी अकाउंट से आपने ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट किया है, वो फ्रॉम फील्ड में आएगा. गॉट इट? और गैस कितना लगा? ऑब्जर्व दैट 1,56,303
वेज उतना ही, मतलब बहुत कम है। ओके, इतना गैस मुझे टोटल लगा टू एग्जीक्यूट द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। सो यहाँ पे सब चीजें ऐसे आपको मिलती जाएगी। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे कुछ कुछ भी डाउट है, इवन माइनर डाउट, सो डोंट वरी अबाउट अदर्स, प्लीज बी फ्रैंक, नो बडी नोज ईच अदर। तो अगर आपको कुछ भी स्मॉलेस्ट डाउट भी आ रहा है, सो प्लीज पुट दैट डाउट इन आवर chat, Google chat. I'll wait for few seconds if you are having any doubt. So in this way, we have deployed our first smart contract, basic smart contract. हाँ, output ने दिखाई दिया. Let's go for the output as well. Don't worry about that. Output भी मैं वो भी print करूंगा. Okay. Please enlarge your font size. Sorry Anita madam, actually on Remix platform उतना ये नहीं रहेगा यहाँ पे, मतलब I cannot enlarge the things. आई एम ट्राइंग एक्चुअली बट इट वोंट हैपन, मतलब ब्राउजर का एक्चुअली होगा भी तो, जस्ट लेट मी चेक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइज बड़ा होता है लेकिन रिमिक्स देयर इज प्रॉब्लम, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता बिकॉज इट्स ऑनलाइन, इट्स देयर प्लेटफॉर्म ओनली। यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, एडवांस वर्जन होता तो ट्रफल में मैं इनलाज कर सकता था VS कोड में, बट ऑल आर द बिगिनर्स, दैट्स व्हाई आई एम प्रेफरिंग रिमिक्स। In Google Meet, you'll be able to zoom that. Please zoom it. You'll be able to know, get the things. Okay, I don't. Can Yes, we can see by zooming. Yes, yes. Priyanka ma'am. Yes, thanks. Same thing. I wanted to dictate over here. Okay. I hope there is no doubt. Let's move further. So now, थोड़ा सा इसको आप, I'll go with, अब देखो मुझे फंक्शन लिखना है इन जनरल। अगर मुझे सी प्लस प्लस में या सी में या जावा में फंक्शन लिखना है तो कैसे लिखना होता है? लाइक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मतलब पब्लिक पहले होता है, राइट? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड मेथड का नाम, मतलब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेथड का नाम, राइट? तो यहाँ पे क्या करना होता है, अगर आपको फंक्शन लिखना ही है तो फंक्शन कीवर्ड शुड बी देयर, एंड देन यू कैन राइट योर ओन फंक्शन नेम, दिस इज द फंक्शन नेम। तो ये फंक्शन हुआ। ओके, दिस इज द फॉर्मेट टू राइट द फंक्शन ओवर हियर। ठीक है, उसके बाद में आपको एक्सेस मॉडिफायर लिखना होता है, इसके बाद में। क्लियर? नाउ आई राइट फ्यू थिंग्स, आई एक्सप्लेन दैट, डोंट वरी। वेरिएबल कौन सा लिया मैंने? नेम। ओके, और एक फंक्शन लिख देते हैं।
I hope it will work. देखते हैं वर्क होता है क्या. हाँ, बिफोर दैट लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग्स टू यू बिकॉज फ्यू ऑफ द थिंग्स आर लिटिल बिट न्यू. ओके, तो हमने पहले ही देखा था लाइक एक्सेस मॉडिफायर विल बी रिटन लेटर. अभी यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे लाइक डू एज्यूम दैट, मतलब यहाँ पे भले मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, डू एज्यूम दैट एक क्लास ही है. ओके, क्लास में मैंने अलग अलग मेथड्स लिखे हैं और दिस कंस्ट्रक्ट आई हैव रिटन. जस्ट जस्ट वेट अ मिनट. ठीक. ओके. हाँ. मैं क्या बोल रहा था. तो ये क्लास ही एज्यूम करो, क्लास में अलग अलग मेथड्स लेके ये एज्यूम करो, ठीक है. मतलब उतना डिफरेंस नहीं है गाइस अगर सच में देखा जाए तो. जस्ट यू आर सपोज टू रिमेंबर कि हम सॉलिडली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हैं, तो क्लास की जगह मुझे कॉन्ट्रैक्ट लिखना है. एंड द फंक्शन अगर लिखना है, मेथड अगर लिखनी है, तो फंक्शन कीवर्ड लिखना ही है, उसके बाद में फंक्शन का नाम. एंड द एक्सेस मॉडिफायर शुड बी रिटन लेटर. इतना याद रखना है आप, ठीक है. नाउ अभी यहाँ पे व्यू लिखा है मैंने. व्यू क्यों लिखा है गाइस, बिकॉज दिस फंक्शन इज गोइंग टू बी व्यूड ओवर हियर. यहाँ पे आपको दिखेगा. आई एक्सप्लेन दिस व्यू बेटर जब मैं डिप्लॉय करूंगा ये. एट दैट टाइम आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन मच मोर इन मच मोर कन्वीनियंट वे. नाउ यहाँ पे मैंने पैरामीटर्स पास किए इन दैट मेथड, बट यहाँ पे मेमोरी मेमोरी लिखा है, राइट. तो मेमोरी इसलिए गाइस बिकॉज इन द रिमिक्स इन द ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म स्ट्रिंग रिक्वायर्स मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर. तो स्ट्रिंग जब भी लिखोगे तो मेमोरी लिखना है. तो ये आपको रट्टा मारो समझे तो. लेकिन यहाँ पे कंसिडरेशन क्या है पता है क्या, लाइक फॉर int अगर मैं int पास करूं, int लिखूं, एट दैट टाइम int के लिए मेमोरी रिक्वायर्ड नहीं है, बट स्ट्रिंग के लिए इस इतने वर्चुअल मशीन का मेमोरी टाइप लगता ही है. दैट्स व्हाई यू आर सपोज टू एक्सप्लिसिटली मेंशन दैट. आई डोंट नो, नाउ आई एम यूजिंग दिस 0.5.1 compiler, so same things might not be done in higher versions. वहां पे मेमोरी गया होगा, लेकिन टिल 0.5/1 मेमोरी कीबोर्ड वाज रिक्वायर्ड. ओके, उसके लिए लिखना है ना. अब तक आपने देखा होगा लाइक इन जावा और सी सी प्लस प्लस, रिटर्न जब हम वैल्यू करते सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न कर पाते हैं, राइट. मतलब रिटर्न 0, रिटर्न 1, रिटर्न कुछ वेरिएबल. लेकिन इन सॉलिडिटी यू कैन रिटर्न मल्टीपल वेरिएबल्स एट ए टाइम. इट्स अलाउड इन द सॉलिडिटी. Yes, of course, guys. मतलब एक्चुअली द हैंड्स ऑन अगर देखा जाए तो पहले मुझे सॉलिडिटी लैंग्वेज सिखानी चाहिए, एंड देन ये प्रोग्राम ले सकते हैं, राइट. बट एक्चुअली मुझे भी उतना टाइम नहीं था. कोऑर्डिनेटर से मुझे पूछा था, सो in this FDP I cannot go through the whole hands-on on Solidity, but at least I can give you the push-up. Definitely, this one will be the push-up for you, so that you'll be able to know much more better in the Solidity language. तो वो हो जाएगा, इतना मैं एश्योरिटी देता हूँ आपको. ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट. सो यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूँ मैं. यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट्स एट ए टाइम हम रिटर्न कर सकते हैं, इट्स अलाउड. ओके, एंड यहाँ पे रिटर्न लिखा है और यहाँ पे रिटर्न्स लिखा है. दोनों चीजें अलग अलग है. whenever I'll be deploying the smart contract, at that time I'll make sure that you'll be able to know about it. Okay, later on फंक्शन सेट नेम, राइट. मैं यहाँ पे एलोकेट कर रहा हूँ कुछ वैल्यू, तो स्ट्रिंग वैल्यू मैं पास करूंगा. द स्ट्रिंग वैल्यू विल, उसका वेरिएबल n है, n की वैल्यू नेम में होगी, इतना याद में रखना, ठीक है. देन फंक्शन गेट नेम, जो भी नेम है वो मैं वापस वापस कैफेज कर रहा हूँ. उतना यहाँ पे कंसेप्ट है, क्लियर. तो आई होप दिस, ये प्रोग्राम आपको समझ में, एटलीस्ट उसका लॉजिक में क्या करने चाह रहा हूँ. ओके, नाउ गाइस आई कैन गो फॉर अनदर अकाउंट. मतलब अनदर अकाउंट सेलेक्ट ही करना है, ये जरूरी नहीं है गाइस, इट्स नॉट रिक्वायर्ड. जस्ट मतलब 100 से ना कुछ गैस वेस्ट हो रहे हैं, ये मुझे आपको दिखाना है, इसके लिए मैं दूसरा अकाउंट सेलेक्ट कर रहा हूँ. ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर. यस, लेट्स कंपाइल दैट. कंपाइल किया है. ओके, नाउ डिप्लॉय दैट. रिमिक्स वीएम पे है, एस्टिमेटेड गैस है 100 है.
अगर मैं डिप्लॉय करूं तो देख लीजिए यहाँ पे अमाउंट कम हो गया है, मतलब कुछ इसमें यूज हो गया है गैस में. सो यू कैन इलेबरेट दैट, यू कैन हैव द लुक एट द ट्रांजेक्शन फॉर एवरी डिटेल्स. ओके. नाउ जब आप डिप्लॉय करोगे गाइस, यहाँ पे आपको सभी फंक्शंस दिखेंगे. ऑब्जर्व दैट. सेट नेम था, ये देखो सेट नेम, सेट नेम आ गया. अभी यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे अगर मैं कुछ वैल्यू एंटर करूंगा, देन दैट वैल्यू विल बी पास टू द एन. एन में वैल्यू वो स्टोर हो जाएगा. देन दिस वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन नेम वेरिएबल. एंड नेम वेरिएबल इज द क्लास वेरिएबल, मतलब ग्लोबल वेरिएबल है. राइट. सो एवरीवेयर इट कैन बी एक्सेस्ड. गेट नेम ओवर हियर, गेट नेम अभी क्या कर रहा है, लाइक फेच कर रहा है, रिटर्न कर रहा है ना. राइट. रिटर्न क्या कर रहा है, नेम. जो भी नेम रहेगा दैट विल बी रिटर्न एंड इट विल बी डिस्प्लेड ओवर हियर. तो अभी मैं आपको समझाता हूं. लाइक व्हेनेवर पब्लिक व्यू रिटर्न्स होता है ना, व्यू रिटर्न्स, एट दैट टाइम द डेटा विल बी अपीयर्ड ओवर हियर. यहाँ पे डेटा विजिबल होगा. देख लीजिए, बाय डिफॉल्ट मैंने क्या किया है, कंस्ट्रक्टर में दत्ता मेघे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ये मैंने नाम दिया था. राइट. कंस्ट्रक्टर में मतलब बाय डिफॉल्ट नेम वैल्यू विल बी हैविंग दत्ता मेघे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग. तो अगर मैं गेट नेम करूंगा, ऑब्जर्व दैट इन आउटपुट यू आर गेटिंग द ओवर हियर दत्ता मेघे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग. गेटिंग दैट, मतलब ये वैल्यू मैंने फेच की है. गेटिंग दैट, मतलब जहां जहां पे भी आप पब्लिक व्यू रिटर्न्स लिखोगे, इसका ये मतलब है दैट वॉट एवर द वैल्यू विल बी देयर, दैट वैल्यू विल बी डिस्प्लेड ऑन द यूजर इंटरफेस ओवर हियर. Now, जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एट दैट टाइम दैट इज ऑल्सो अनदर ट्रांजेक्शन. ये देखो, ये उसका अलग ट्रांजेक्शन है गाइस. ये अलग ट्रांजेक्शन है, ये सेम ट्रांजेक्शन नहीं है. गेटिंग दैट, मतलब डिप्लॉयमेंट का ट्रांजेक्शन है. गेट नेम पे मैंने क्लिक किया ना, इसलिए वो ट्रांजेक्शन आ गया. तो जस्ट क्रॉस वेरीफाई. देखो अभी यहाँ पे कुछ नहीं है ना, गेट नेम, ये देखो आ गया अलग ट्रांजेक्शन. ये देखो स्ट्रिंग दत्ता मेघे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग. ठीक है. Got it? Got it? तो कहीं पे भी क्लिक करो, every click is going to be considered as your one of the transactions. ओके. नाउ अभी ये बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का वैल्यू लिया था मैंने. राइट. तो अभी मैं क्या करता हूँ, फिलहाल मैं कुछ अलग नाम देता हूँ. सो कैन यू सजेस्ट मी योर कॉलेज नेम, जो भी पार्टिसिपेंट्स है, आई विल पुट ओवर हियर. आई वांट इनपुट फ्रॉम योर साइड. ओके. नो इनपुट्स. ओके, गॉट इट. यस. थैंक्स प्रोफेसर दास. Okay, Sikkim Manipal University. Let me go over here. Okay, so I'm going to set this name. Now observe here, यहाँ पे changes दिखाई देंगे आपको. हाँ, set name, ये देखो अलग ट्रांजेक्शन है यहाँ पे. Getting that? मतलब अभी क्या हुआ है, like हमने यहाँ से वैल्यू सेट किए. सो कंस्ट्रक्टर की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू थी दत्ता मेघे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, दैट वाज ओवर रिटन बाय सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी एंड विच वाज सेट ओवर हियर. मतलब अभी गेट नेम करूंगा तो इट विल बी सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी. मतलब गाइस, एक नॉर्मल प्रोग्राम है कि नहीं, इट्स सिंपल प्रोग्रामिंग लाइक जावा सी प्लस प्लस जैसा ही है. सो देयर इज नो बिग डील इन द ब्लॉकचेन. इट्स रियली वेरी सिंपल. Just awareness is required, so go for that. It's really pretty cool. And believe me, now already I'll be doctorate in December, might be. So I have gone for this 4 to 5 years of research in the blockchain. So just the thing is that people are not aware about the blockchain, that's it. But the thing is that like you can have good collaborations with multiple integrations of the technologies for your research. And there are very less people in the blockchain research. That's why the thing is that you'll be the prominent in your domain as well. So try to go for the research point of view in the blockchain. You'll get good hands on that. Okay. So now what I'll do, I'll say hello. Say hello मतलब अभी रिटर्न में क्या आएगा, hello कीवर्ड आएगा, वो रिटर्न हो रहा है, प्लस नेम आएगा. अभी लेटेस्ट वैल्यू ऑफ नेम इज सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी. सो इफ आई गो फॉर से hello, you'll be getting hello सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी. Got it? So now if you are having any doubt over here, please let me know. Any doubt?
Even a small doubt you can put there. Don't worry about others. Okay. I hope there is no doubt. There are, sir, where can we get solidity language documentation? Okay, I'll provide you the links. Miss, I'm in touch with, just hold on. Yes, Sheila ma'am. I'm in touch with Sheila ma'am from Datta Meghe College. So I'll share with her the documentation or whatever the things are required. So you can be in touch with the coordinator of Datta Meghe College, that is Sheila ma'am, and you'll be able to get the solidity documentations. Okay. Okay, I hope there are no further doubts. So let's proceed now. अभी guys जो भी हमने program किया है, it was very simple, right? So likewise you can go for your own programs, logic. Okay. Now the thing is that guys you can observe that कि ये virtual machine पे किया है ना, मैंने local host पे किया है. Actual blockchain पे तो नहीं किया है मैंने. जैसे मैं दिखा रहा था बड़ी बड़ी बातें करके, right? तो ये देखो like नहीं, यहाँ पे मैंने क्लोज किया है शायद. ये इतना टाइम लगता है ब्लॉकचेन का, राइट? इतना मैंने ब्लॉक्स दिखाए थे. यहाँ पे मैं दिखा पा रहा हूँ कुछ नहीं, because you are not really working on the blockchain right now. It's just the simulation of your blockchain network. ये simulation है, local host पे ही है. लेकिन अगर आपको रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू लगेगा तो दिस नॉट इनफ. योर गाइड, योर सुपरवाइजर विल किक यू आउट, राइट? सो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. सो आपको कुछ टेस्ट नेटवर्क चाहिए ब्लॉकचेन की. Got it? So let's work on the test networks now. So for that one, you are supposed to Google MetaMask. Okay? Why? Because if you want to really simulate your blockchain network, definitely, guys. The thing is that actual blockchain पे आप काम नहीं कर पाओगे because इथेरियम का एक इथर का वैल्यू 2 लाख रुपए है, राइट? तो जस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल पर्पजेस उतना अमाउंट आप थोड़ी कोई वेस्ट करेगा, राइट? अगर एक्चुअल डिप्लॉयमेंट होता, प्रॉपर business deployment, at that time you can understand, but just for the our experimental purpose, research purpose, we cannot invest that much. That's why we should go with the test network. So पहले आपको क्या करना है, मेटामास्क गूगल में सर्च करना है, क्लिक ऑन दैट एंड प्रीफरेबली यूज गूगल क्रोम. ये क्रोम का ही मेन एक्सटेंशन है. सो क्रोम में ही जाना है, क्रोम में मेटामास्क गूगल करना है, देन गो ऑन दिस metamask.io. नाउ द थिंग इज दैट यहाँ पे मुझे कुछ दिखाएगा नहीं. ओके, व्हाट आई विल डू, जहाँ पे नहीं है ना मेटामास्क वहां पे जाता हूँ मैं. वेट, यहाँ पे मेटामास्क मेरा नहीं है. सो आई विल गो ओवर हियर, metamask. If you are following me, please go with me. I'll be taking little pauses. कहाँ पे गया एक्सटेंशन इसका, शायद ऑलरेडी. हम्म, ऑलरेडी है यहाँ पे. लेट मी चेक एनी. जस्ट वेट. आई एम हैविंग मल्टीपल अकाउंट्स. यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ पे शायद नहीं होना चाहिए. हाँ, यहाँ पे नहीं है. सो आई विल गो फॉर द मेटामास्क. Look, now you'll be getting such options. Get MetaMask, right? So click on Get MetaMask. Now we are using the Chrome. Don't go for Android or iOS because it will not help us to program. सिर्फ वॉलेट मेंटेन करने के लिए iOS और Android मोबाइल फोन्स में यूज होते हैं, लेकिन हमें क्रोम पे चाहिए. सो क्लिक ऑन क्रोम, देन क्लिक ऑन इंस्टॉल मेटामास्क फॉर द क्रोम. ऐड टू क्रोम करना है, ऐड एक्सटेंशन.
Okay, it will take some time. देखो, ये यहाँ पे मेटामास्क आ गया, एग्री करना है। अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास है ऑलरेडी, देन यू शुड इंपोर्ट एग्जिस्टिंग वॉलेट, लेकिन आपके पास नहीं है, आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर नॉट हैविंग दैट, so go on, create new wallet, click over here, I agree. यहाँ पे आपको पासवर्ड देना है कुछ ना कुछ, so let me go with the password. Skip, got it. Next, next, done. So this is your wallet guys. यहाँ से आप एक्चुअल इथेरियम पे कम्युनिकेट कर सकते हो मेन नेट पे, लेकिन मेन नेट पे उतना पैसा नहीं बर्बाद करना है, राइट? सो क्लिक ऑन शो टेस्ट नेटवर्क्स. Now you'll be having Sepolia test network. This one. Got it? I hope most of you are following me and you are till over here. यहाँ तक आने में किसी को भी कुछ दिक्कत आ रही है तो प्लीज लेट मी नो. Okay, means you are with me. ठीक है. Now guys, you can observe that in test network you are not having anything. अगर कुछ है ही नहीं तो गैस कहाँ से यूज करोगे आप, राइट? तो द थिंग इज दैट गाइज, यहाँ पे गूगल करना है सेपोलिया फॉसेट. ठीक है, सेपोलिया फॉसेट यूज करो, गो ओवर हियर. बट नाउ गाइज, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या पता है क्या? अभी मोस्ट ऑफ दी ether providers, they want that real money should be there in the account. मतलब 0.001 इथर अकाउंट में होनी ही चाहिए, ऐसा ये बोल रहे हैं. सो अगर इट्स लाइक दैट, डोंट गो फॉर दैट, डोंट वेस्ट मनी. ओके, आई विल गिव यू वन सॉल्यूशन. यहाँ पे मैंने वो निकाल के रखा है. यस, चेन लिंक का प्रोजेक्ट है. आई विल पुट दिस इन आवर chat group as well. Yes, thank you, Chita ma'am. यहाँ पे मैंने लिंक डाली है, सो गो ओवर देयर. ठीक है. मैं यहाँ पे जाता हूँ, मेरा मेटामास्क कहाँ है? यहाँ पे. ओके, सो लेट्स गो ओवर हियर. इधर जाने के बाद स्क्रॉल डाउन, गो ऑन दिस फॉसेट्स चेन लिंक सेपोलिया. यहाँ पे सेपोलिया के जो भी नेटवर्क से बाय डिफॉल्ट क्लिक रहेंगे तो उसको कंटिन्यू करना है. वेरीफाई यू आर ह्यूमन. ठीक है, आपके पास इसके लिए गिटहब का अकाउंट होना चाहिए. सो कंटिन्यू विद गिटहब करना है, वो उसका मैंडेट है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो भी गिटहब का अकाउंट होगा, प्लीज गो फॉर दैट. सॉरी. ओके, आई होप यू आर विथ मी. यहाँ तक आ जाओ प्लीज. प्लीज गिव मी द कंफर्मेशन वेदर यू आर विथ मी. Sir, Yes, Vidya ma'am. we haven't got the by default selections when we are Uh, joining with Sepolia testnet. Okay, if you are not got the by default selections, then go for Ethereum Sepolia. Okay, only one is enough. Uh, नहीं, you go with like Ethereum Sepolia, उसके नीचे लिखा होगा ड्रिप्स 0.1 ETH.
Right. It is written. Yes, yes. Select that one. That is required for us right now. Okay, that is continue after that, na, right? Yes, continue. So I hope you are with me. Now kindly please go to the MetaMask. ये जो आपका एड्रेस है ना, वो एड्रेस यहाँ पे क्लिक करो, कॉपी हो जाएगा. So once it is copied, यहाँ पे वो एड्रेस पेस्ट करना है. यहाँ पे ऑब्जर्व करो गाइस, यहाँ पे सिर्फ जीरो से पहले इधर है. नाउ क्लिक ऑन गेट टोकन्स. ओहो, Excuse me, sir. Which address we need to copy? दिस वन. यहाँ पे सेपुले इथर का सेलेक्ट करने के बाद दिस एड्रेस. ओके. मेरे मशीन से मैंने ऑलरेडी लिए थे, सो दैट्स व्हाई मुझे ये नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको मिलेंगे यहाँ पे. यहाँ पे आपकी अमाउंट अलग हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे मैंने क्या किया था, जस्ट बिफोर द स्टार्टिंग द सेशन यहाँ पे मैंने ऐड करवा लिया था. सो आई एम हैविंग दैट मच इथर्स, पहले से भी थे. और इसे ये देखो, यहाँ पे 0.1 इथर्स आज ही मैंने मुझे मिले हैं, राइट. सो यू विल बी गेटिंग दैट. किसी को मिले? Anita ma'am wants to repeat the step. So firstly, I'll repeat the step again. MetaMask, I hope you have installed that. Installation के बाद you are supposed to go on this link, which I have already pasted in our group. So click on faucets chain link. Then यहाँ पे by default यहाँ पे selection होगा, नहीं होगा तो ये दो आपको select करने हैं. एक किया तो भी चलेगा, but दोनों किए तो better. Then continue. Continue होने के बाद you are supposed to verify you are human being. Then you are supposed to like log in to the GitHub. अभी मैंने already log in किया है, इसलिए मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे. Okay, so it must be log in. Then जो भी एड्रेस है ना यहाँ पे आपका अकाउंट का MetaMask में, that is supposed to be pasted over here. And then click on get tokens. Now I'll not be able to get the tokens because the thing is that I already got the amount. Okay, already मुझे मिले हैं इसका ethers. That's why it will be failed, but for you it will be opened. किसी को मिले हैं? Okay, with them ma'am or like Sheila ma'am, we will be sending you the recorded video to this. Please follow these steps. Definitely you'll be getting that. So no worries. Okay. Seema ma'am, you are asking about the amount, right? The ether amount. हाँ, so it will be over here. यहाँ पे आ जाएगा देखो. If you click on this MetaMask, you'll be getting the amount over here. Okay, now let's proceed, guys. अभी क्या करना है? यहाँ पे जो environment है, click on that. Now you are supposed to click with injected provider. मतलब the thing is that जहाँ पे आपने
मेटामास्क इंस्टॉल किया है, उसी में आपको रिमिक्स ओपन करना है. देन यू आर सपोज टू क्लिक ऑन इंजेक्टेड प्रोवाइडर. नाउ ऑब्जर्व दैट द एड्रेस विल बी चेंज्ड. C9F, यही एड्रेस इसका भी होगा. देखो, C9F, राइट? दिस एड्रेस हैज बीन पॉप्ड ओवर हियर. गेटिंग दैट? अगर अभी आपको डिप्लॉय करना है तो कंपाइल करो. नाउ डिप्लॉय करना है तो देखो आप क्या होता है. क्लिक ऑन डिप्लॉय. नाउ मेटामास्क विल बी पॉप्ड अप. ये अभी रियल वर्किंग हो रहा है फॉर ब्लॉकचेन. इस तरीके का वर्किंग होता है. नाउ यू कैन ऑब्जर्व दैट गाइस, यहाँ पे देखो एस्टिमेटेड फी इतना अमाउंट जा रहा है. गेटिंग दैट? ये मार्केट का प्राइस है. अभी मार्केट का प्राइस वो फेच करके इतना अमाउंट जाएगा अप्रोक्सीमेटली. एंड इफ यू कंफर्म ऑन दैट वन, थोड़ा टाइम लगेगा. देखो, क्रिएशन ऑफ हेलो पेंडिंग, इट विल टेक टाइम. अभी वो माइन हो रहा है, समझे? अभी वो इनिशिएट, मैंने ट्रांजेक्शन इनिशिएट किया है. दिस इज गोइंग टू बी वेरीफाइड. ये देखो अभी माइन हो चुका है. इट टेक्स सम टाइम. दैट इज एक्चुअल वर्किंग. यहां से आप ऐसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करके आपके रिजल्ट निकाल सकते हो फॉर योर रिसर्च पर्पसेस. नाउ क्लिक ऑन दैट. नाउ ऑब्जर्व ओवर हियर, यू विल बी गेटिंग ऑल द डिटेल्स. अभी इसका आपको ब्लॉग भी दिखेगा. जस्ट वेट. ये अभी हमने किया था, राइट? वी ऑन द ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर. ये देखो जो मैं दिखा रहा था पहले, अभी ये एक्चुअल ब्लॉकचेन पे दिख रहा है आपको. गेटिंग दैट? सिंपली इज द टेस्ट नेटवर्क ऑफ इथेरियम ब्लॉकचेन. यहाँ पे देखो वन ब्लॉकचेन कंफर्मेशंस, ये ट्रांजैक्शन हैश है फ्रॉम दिस अकाउंट. मतलब ये अकाउंट किसका है? लाइक दिस वन, मेटामास्क के मैंने फेच किया था, राइट? ये देखो, तो ये अकाउंट एंड गैस प्राइस इतना था जीवे, राइट? तो दिस इज द वे. नाउ अगेन ओवर हियर इफ आई कम बैक, यहाँ पे डिप्लॉयड हो चुका है. अभी अगर डेटा फेच करना है तो उतना टाइम नहीं लगेगा. देखो, इमीडिएटली विल बी गेटिंग दैट, राइट? अगर आपको डालना है, नाउ फॉर एग्जांपल किसी ने तो चैट में डाला था दूसरा नाम, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी. यस, प्रियंका मैम ने डाला था. सो लेट मी पुट दैट. कहाँ गया मेरा रिमिक्स? यस, ओवर हियर. सेट नेम, जब आप ब्लॉकचेन पे वैल्यू डालोगे, एट दैट टाइम मेटामास्क विल पॉप अप एंड यू आर सपोज टू कंफर्म दैट. अगर फेच करनी है तो मेटामास्क पॉप नहीं करेगा, गैस उतना नहीं लगेगा. लेकिन अगर ब्लॉकचेन पे अगर आप वैल्यू डाल रहे हो, देन इट इज सपोज टू बी थ्रू दी लाइक दिस थिंग्स. सो कंफर्म. नो अगेन इट विल टेक टाइम. देखो, हाँ, यहाँ पे भी देख सकते हो आप. देखो पेंडिंग है, अभी कंफर्म हो चुका है. मतलब अभी माइन हो चुका है. मतलब जितने भी ऐसे रिमिक्स यूज कर रहे हैं, सॉरी स्टेबल नेटवर्क यूज कर रहे हैं, वो नोड्स एट द बैक एंड with their algorithm, they will check whether my transaction is valid or not. Getting that? So now ये देखो पूरी चीज यहाँ पे दिखेगी. इवन यू कैन गो विद द ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर. सो गेट नेम अगर देखा जाए तो राजीव गांधी एक्सट्रैक्ट होगा वहां से. से हेलो हेलो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी. Got it? So in this way you can work. So that's it from my side for today. आई होप आपको छोटा सा आइडिया मिला होगा कि एटलीस्ट प्रोग्रामिंग कैसे स्टार्ट करनी है. हाँ, इन एडवांस आई एम सॉरी दैट फुल्ली मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा बिकॉज ऑफ द टाइमिंग कंस्ट्रेंट्स. ओके, बट एटलीस्ट यू माइट हैव गॉट द लाइक स्टार्टिंग आइडिया कि कहाँ से स्टार्ट करना है. ओके, so that's it from my side, guys. If you are having any doubts, I'm open for the questions. If you want to be in touch with me, thanks Meha Sharma ma'am. This is my email ID and this is my mobile number. So these are my details. If you want to be in touch with for any research ideas or any of the things, please let me know. Yes, thanks all. Thanks Rashid sir. Thanks Asma ma'am, Sikant sir, Anita ma'am. हैंड्स ऑन एनएफटी. एनएफटी के लिए ठीक है,
लेट्स सी कब ले सकते हैं. थैंक्स रुचिका मैम. So, all the participants, are there any queries? So, thank you very much, sir, for your very informative and hands-on session. We at least Thank got you. some idea about Ethereum and Solidity. Very nice, sir. And we will be sharing the links for these recordings, the drive, up to the end of the meeting. Yes. Okay. Yes, sir. Thank you so much. Yes. Thank you, ma'am. Thank you all. Sir, गेले वाटतं. Had to start from if I want to learn from scratch. आता ते गेले ना सर, आता आम्हाला काय माहिती. It is on. Sir, Our next sessions will be on Monday at 11 o'clock. So please join those 14th and 15th session. Those are again quite informative from the industry persons. Thank you all. You can leave. Session links are already shared with you. We are again resending the links. Kindly complete out the things. Thank you all.